नजर जब बारी आएगी तो Assalamu alaikum, dear fellows and dear teacher. Myself Hafiz Umar Sultan from the Department of Garments Manufacturing under the registration number is 20 NTU TE 0118. Today the topic of our presentation is relay. We will present this topic with the help of group. My group member name is Mr. Talha Manzoor, Mr. Saifur Rahman, Mr. Zishan Zahir, and Mr. Bilal Ijad. So, firstly, I would like to define the contents of my topic, which my groups discuss one by one. First, we will discuss about introduction of relay, construction of relay, working principle, types and their explanation, advantages and disadvantages, and at last applications. First of all, I will introduce the relay. What is relay? रिले बेसिकली ना हम कहते हैं कि जब हमने उसको हम कहते हैं कि चाहते हैं कि लाइट ऑफ हो जाए ना, जब जिसको कहते हैं वापडा की लाइट आ रही होती है पीछे से, तो जैसी लाइट ऑफ हो ना हमारी ना यूपीएस के ऊपर ना बाकी चीजें चलती रहीं, तो वहां पे जो हम यूज करते हैं ना सर्किट, जो स्विच यूज करते हैं, जब बेसिकली इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच यूज करते हैं, उसको बेसिकली रिले कहते हैं। चलो इधर से हम थोड़ी सी स्लाइड रीड करके देख लेते हैं क्या कहता है। वो कहता है रिले इज एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच। मैनी रिलेज यूज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट टू मैकेनिकली ऑपरेट अ स्विच। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो है जब इसको हम किसी भी ऐसे मैग्नेट जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करें ना, तो उसकी जो गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाए ना, उस फील्ड की वजह से जो करंट फ्लो हो ना, वो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। But other operating principles are also used, such as solid state relay. Relays are used where it is necessary to control a circuit by a low power signal. मैं जैसे कि कहा ना अभी, एक वापडा की हाई सिग्नल कह रहे हैं आप आ रहा होता है, और यहाँ पे हम लो पावर सिग्नल को भी दे के हम पूरी वापडा की जितनी उसको वोल्टेज रिक्वायर होता है हमें वो मिल जाता है। With complete electrical isolation between control and control circuits, or where several circuits must be controlled by one signal. The first lever used in long distance telegraph circuits as amplifier. They repeated this signal coming in from one circuit and retransmitted it another circuit. A type of relay that can handle the high power required to directly control an electric motor or other load is called a contactor. So the next portion is working construction of relay. I would like to invite Mr. Talha Manzoor to discuss about the construction of relay. Thank you. Construction of relay. A simple electromagnetic relay consists of a coil of wire to which a voltage is applied, which is wrapped around a soft iron core, an iron yoke, a movable iron armature, and one or more sets of contacts. The armature is connected to the yoke and mechanically linked to the sets of contacts. As you can see, the relay in this picture also has a wire connecting the armature to the yoke. So this was the basic construction of relay. Now we move forward to its working principle to know how an electromagnetic relay works. It works on the principle of electromagnetic induction. Before the voltage is applied to the coil, the relay is said to be in its normal position or de-energized position. But when we apply the voltage, the current flows through the coil of the relay, which creates a temporary magnetic field around it and attracts a lever and change the switch contacts. This is called energizing of relay. When the supply is removed, it retrieves back to its original position, and this is called de-energizing of relay. Because the coil current can be on and off, so a relay has two switch positions, which are called normally closed and normally open. Move forward to next slide, please. In a normally open relay, contacts connect the circuit when the relay is activated, and the circuit is disconnected when the relay is inactive. And on the other hand, in normally closed relay, contacts uh, the contacts disconnect the circuit when the relay is activated, but connect the circuit when we deactivated the relay. So now I would like to invite Mr. Saifur Rahman to explain some types of relay.
Please show the slides. Hafiz. Hafiz Umair. So, types of relays, they are following types of relays. The first of all is a latching relay, induction type relay, and relay. I will discuss about latching relay. Latching relays are electronic parts that are used to control large flow of electric current with a small flow. A latching relay impulse, keep, or stay maintains either contact position indefinitely without power applied to the coil. The advantage is that one coil consumes power only for an instant, which the relay is being switched, and the relay contacts retain this setting across a power outage. It uses a pulse to move the switch that then stays in the position, and it reduces the power requirement slightly. This type is widely used where control is from simple switches or single-ended outputs of a control system, and such relays are found in Americans and numerous industries applications. So next one is induction type relay. Uh, these are used as protective relays in AC system alone and are usable with DC system. The actuating force for contact movement is developed by a moving conductor that may be a disc or a cup through the interaction of electromagnetic fluxes due to fault currents. So induction relay is a type of electromagnetic relay that works on the principle of electromagnetic induction and is resembled to a split phase induction. Induction type relay are also called sometimes magnitude relays. It consists of two magnets, one is E-shaped and the other one is U-shaped magnet. The disc is free to rotate between the two magnets. When the disc is rotate and the circle complete, the switch on. So next one is reed relay. Reed relays can switch. A reed relay is a reed switch enclosed in a solenoid. A reed relay is a type of relay that was an electromagnetic to control one or more reed switches. The contents are of magnetic material and the electromagnetic acts directly on them without requiring any force to move them. The reed relay contains a switch, an optional diode, a glass capsule containing plate. So if magnetic field applied along the axis of the reed blades, the field intensified in the reed blades because of this equilibrating nature. लाइक रीड में भी ये होता है कि एक कैप्सूल टाइप होता है और उसके अंदर एक जो प्लेट्स होती हैं जो कि आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं होती और उसके दोनों एंड पे एक ब्लेड्स लगी होती हैं जब उनके दरमियान हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल पैदा होते हैं जो कि प्लेट्स को आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ जब वो अट्रैक्ट होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं और स्विच क्लोज हो जाता है और सर्किट ऑन हो जाता है तो फर्दर टाइप ऑफ रिलेज विल डिस्कस ईशान थैंक यू Mercury wetted relay. A mercury wetted relay is a form of relay in which the contacts are wetted with mercury. So basically, in this type of relay, the two ends of the relay are wetted with mercury so that to smoothen the contact place. And this type of relay is not used nowadays because of the poisonous of mercury material and the cost it takes to buy this type of materials such as mercury. So that's why the mercury is nowadays is not used in this type of relay, and this relay itself is not used nowadays. So the next, please. Solid state relay. A solid state relay or SSR is a solid state electronic component that provides a function similar to an electromechanical relay but doesn't have any moving components, increasing long term reliability. सो जो सॉलिड स्टेट रिले है इसका क्या कहते हैं टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होती है और क्या कहते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ जो करंट्स होते हैं ये उसको डिटेक्ट करने में ज़्यादा इसका किरदार होता है और क्या कहते हैं जो थोड़े से भी थोड़े वोल्टेज ड्रॉप जो होता है ना ये उसको भी सेंस कर लेती है और अपना ये फंक्शन परफॉर्म करती है नाउ बिलाल इजाज विल प्रेजेंट फर्दर
इसके एडवांटेजेस में अगर हम देखते हैं तो इसका जो ऑपरेशन है वो बहुत फास्ट है, और फास्ट ये हमें रिस्पॉन्स बैक कर रहा होता है, क्योंकि हमने जैसे कि देखा कि ये मैकेनिकली जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू ये स्विच जो है हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के पैदा होने की वजह से। दीज कैन बी यूज फॉर द बोथ AC एंड DC सिस्टम्स। इन रिलेज को जो है हम AC और DC सिस्टम में ऑपरेट कर सकते हैं। AC और DC इक्विपमेंट से बेसिकली इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन के लिए हम इसको करते हैं, क्योंकि जितनी भी फ्लक्चुएशंस वगैरह करंट्स के अंदर आती हैं, हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं इन रिलेज को इंस्टॉल करके। दे हैव द प्रॉपर्टी सच एज, ये बेसिकली सिंपल होते हैं, रोबस्ट, कॉम्पैक्ट और ये रिलायबल होते हैं। दीज रिलेज आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, किसी भी साइन कर्व पे या कॉस कर्व पे जो भी इनकी फ्रीक्वेंसी कर्व होती है उस पे ये इंस्टेंटेनियसली हमें किसी भी पॉइंट पे ऑन द स्पॉट हमें वैल्यू दे देते हैं। ये इनका सबसे जो है बेसिकली एडवांटेज है। अगर हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो दो डायरेक्शनल फीचर है इसके अंदर, वो जो है वो एब्सेंट होता है। इनके अंदर रिक्वायर्स पीरियोडिक मेंटेनेंस, इनकी हमें बेसिकली जो है मेंटेनेंस करनी पड़ती है वक्फे वक्फे से बार बार, एंड टेस्टिंग, और हमें इनको बार बार इनके ऑपरेशंस को देखते रहना चाहिए, और इनको हम एग्जामिन करते रहते हैं, इनकी टेस्टिंग करते रहते हैं, कहीं इनके ऑपरेशन में जो है इनके वर्किंग में कमी तो नहीं आ गई कोई। रिलीज ऑपरेशन कैन बी अफेक्टेड ड्यू टू एजिंग ऑफ द कंपोनेंट्स। बेसिकली अगर तो वही बात कि कंपोनेंट्स की मुद्दत पूरी होने के बाद भी ये इफेक्ट हो रहे होते हैं, इनके ऑपरेशन जो हैं वो खास नहीं रहते, काम करना जो है छोड़ देते हैं। एंड डस्ट पोल्यूशन रिजल्टिंग इन स्पोरियस ट्रिप्स, और इनके अंदर ट्रिप्स आती जाती हैं अगर कोई पोल्यूशन या डस्ट का कोई भी फैक्टर जो है इनके अंदर आ जाए। हाफिज आगे करना। एप्लीकेशन, electromagnetic relays are employed for the protection of various AC and DC equipments। ये हमने देख लिया एडवांटेजेस में कि ये AC और DC सिस्टम्स की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, क्योंकि इनमें जो है हमारे पास हाई और लो वोल्टेज को कैरी करने की, उनको कंट्रोल करने की इनके अंदर जो है वो कैपेसिटी होती है। द ओवर अंडर करंट एंड वोल्टेज प्रोटेक्शन ऑफ द वेरियस AC and DC इक्विपमेंट्स फॉर different protection used as auxiliary relays in the contact system of protective relay schemes. Next, conclusion. बेसिकली हम रिलेज को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि ये जो है हमारे पास ये बहुत सारे सर्किट्स को भी कंट्रोल एक सिग्नल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, और एक सर्किट को भी ये लो पावर सिग्नल के थ्रू जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास यही है। अगर हम इसके मुतबादल देखते हैं तो हमें जो दूसरी करंट डिवाइसेस होती हैं, जो हाई करंट डिवाइसेस होती हैं, वो उनके लिए हमें बड़े बड़े स्विचेस की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम करंट को कंट्रोल कर सकें, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही एक्सपेंसिव जो है तरीक़ेकार बन जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम रिलेज को यूज़ करते हैं, जो कि एक लेस मोर इफेक्टिव एंड लेस कॉस्ट है। नेक्स्ट, थैंक यू।